Students, today I am going to start the another part of the first curriculum, that is unit and dimension. Before class रे हम पढ़े किछि physical quantity रो unit and dimension. Yes or no? So आज हमें आउ किछि physical quantity रो unit and dimension जानिबा. Is like हमें गत थर जो जानथिले momentum आज जानिबा. सो एनर्जी जानी थिले एनर्जी रो फॉर्मूला इक्विवेलेंट टू वर्क एंड द एमएलटी फॉर्मूला इज m l square t minus 2 and the dimension is square bracket of m1 l2 t minus 2 and dimension is 1 2 minus 2. The unit SI unit is joule और m के साकार लिख ले kg मीटर स्क्वायर second minus 2 and CGS unit is arc ARG arc और ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर into second minus 2. So हमें another physical quantity जिबा, that is power. Power represented by the symbol of P, and that P is equal to work divided by time, and that MLT form is that work M1 L2 T minus 2, time is T1, that is equal to M1 L2 T minus 3. So clear, my students? So now the dimension formula is that M1 L2 T minus 3 within square bracket, and the dimension is 1 2 minus 3. So what is the SI unit now? Watt और जूल पर सेकेंड और केजी मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड माइनस 3, and the CGS unit is that arc per second और ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर second minus 3. So that is the unit dimension of power. So another physical quantity we consider, that is frequency. And frequency बहु जगह रे n भलिया रिप्रेजेंट करथवा बेले किछि किछि जगह रे f आकार रिप्रेजेंट करा जाए. So next the frequency n is equal to 1 by time period or 1 by time or 1 by t को भरवा, and that n equal to t inverse in the MLT form, and the dimension formula is m0 L0 T minus 1, and the dimension is 0 0 minus 1, and the unit is second inverse both SI and CGS, but SI ର special unit ଅଛି Hertz, that is HZ.
special unit of frequency in SI is hertz. Clear my students? Similarly आमे आउ किछि फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्लेन करबा. एबे आमे लिखिबा वेवलेंथ. Wavelength represented by the symbol of lambda, and that wavelength is equal to आमे कहि परिबा that lambda is equal to C divided by frequency, where आमे C means सेठी कहि परिबा velocity of light divided by frequency. Velocity of light by frequency is the formula of wavelength. So what is the MLT form? MLT form ଆସିବ m0 L1 t minus 1 is the MLT form of velocity and frequency is t minus 1. So finally ଆସିଗला t minus 1 ऊपर चली जीवो तो रिजल्ट आसीबो m0 L1 t0 minus 1 टा ऊपर चलेला, that is हला plus 1 minus 1 plus 1 that is equal to 0. So dimension formula आसिला m0 L1 t0 and dimensions is 0 1 0 and unit is there meter in mks or angstrom in SI आकार कपर CGS रे centimeter, that is the unit of SI and CGS. Clear my students? Similarly another physical quantity, torque and impulse. A naught means angstrom. Another physical quantity that is called torque. That symbol is tau, and the tau is equal to force into perpendicular distance between two arms, or force into momenta, that is torque. So that MLT form is m1 L1 t minus 2 into L1 and that equal to m1 L2 t minus 2. So final dimension is that m1 L2 t minus 2 and the dimension is 1 2 minus 2. So the unit is that Newton into meter and the CGS unit is that dyne into centimeter. Similarly, the another physical quantity, impulse. What is this? Impulse. Impulse. So the impulse is equal to change in momentum कहि परिबा or force
इंटू आम टाइम कहीपर इम्पल्सटा गोटे टाइप रो फोर्स सो फोर्स इंटू टाइम दैट इज आसीज m1 l1 t minus 2 into t1 that result is m1 l1 t minus 1 that is the change in momentum and the result is that m1 l1 t minus 1 so 1 minus 1 is the डायमेंशन ऑफ इम्पल्स मुझे कही रखिली जे इम्पल्स रो अन्य नाम होची चेंज इन मोमेंटम सो द डायमेंशन ऑफ मोमेंटम जहाँ यार मध्य सेया हो एंड द यूनिट इज दैट न्यूटन इनटू सेकंड एंड सीजीएस यूनिट इज दैट डाइन इनटू सेकंड क्लियर another physical quantity that is stress and that stress is equal to force divided by area आको तुम्हें नीचे करिवो प्रेशर यूनिट डायमेंशन जहाँ स्ट्रेस यूनिट डायमेंशन मध्य सेया बा स्ट्रेन रे आमे लिखि पारिबा चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन सपोज आमे लेंथ अनुसार में यदि गोटे एक्सप्लेन करबा ताने चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन इज नोन एज द स्ट्रेन एंड द dimension formula of the strain is m0 l0 t0 similarly the dimension is 0 0 0 0 and unit no unit student वर्तमान में केतो वर्तन गले जे एक्चुअली स्ट्रेन जाइथिले तो बर्तमान नेक्स्ट को जीवा में एंगल केमती डायमेंशन आ यूनिट मेंशन हो angle theta and that theta is equal to arc divided by radius and that arc means a length that is chapo length divided by length and that is equal to L0 ताको यदि हमें L0 मिलला एटार हमें डायमेंशन आकर लिखिबा दैट इज m0 l0 t0 बट जेहेतु एंगल गोटे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी तेणु तार फंडामेंटल यूनिट अनुसार तार डायमेंशन मध्य लिखा जाय पारिबो दैट इज m0 l0 t0 एंड दैट इज रेडियन 1 and dimension is that 0 in mass 0 in length 0 in time and 1 in radian and SI unit is radian or that is the fundamental unit
and CGS has no unit. CGS रो आर यूनिट नहीं. Similarly आमे यदि कहवा angular displacement also called as the angle that equal to angle, and that is represented by say L0, and that dimension formula is M0 L0 T0 radian 1 and similar. Angle जहाँ angular displacement मध्य से आसला. Then again another one is that angular velocity. Angular velocity represented by the symbol of omega, and that omega is equal to angular displacement divided by time. So that MLT form is that T minus 1 radian 1. So dimension formula is M0 L0 T minus 1 radian 1. And the dimension is that 0 0 minus 1 1, and the unit is that radian 1 second minus 1, and CGS unit मध्य यार मेंशन हवा नहीं. Similarly यदि CGS लिखिवा खाली second minus 1, because it is a fundamental. Another one is that angular velocity not a fundamental, but angle is fundamental. So angle by radian आउ लेखा जीवनी कोडी CGS रे केवल second inverse यदि लिखियो. So angular acceleration represented by the alpha, and that alpha is equal to angular velocity omega divided by time, and that represented by the T minus 2 radian 1, and the dimension formula is that M0 L0 T minus 2 radian 1, and that is 0 0 minus 2 1, and that is radian 1 second minus 2. यदि हमें CGS रे लिखिवा खाली second minus 2 लिखिवा, not radian. Another physical quantity, that is angular momentum. जेमती सब linear momentum, linear velocity, linear acceleration, exactly angular बा circular motion रे तार naming है इसबो angular displacement. सेठी linear displacement, angular displacement, linear velocity, angular velocity, linear acceleration, angular acceleration. So those are the physical quantity with respect to dimension and unit. Another way explain another physical quantity, that is angular momentum. What is the symbol now? That is L. The symbol of angular momentum is L. Angular momentum, that is L. So that L equal to आमे लिख परिबा mass into velocity
linear velocity into radius in the circular path. So तार MLT format केते आसीबो L equal to mass equal to m1 L जगह रे हम लिख परिबा L1 t minus 1 into radius जगह मध्य L1 लिख परिबा. So finally केते हला ताले L equal to एटा linear momentum L not length L angular momentum L, that L equal to asla m1 L2 t minus 1. So finally dimension formula is that m1 L2 t minus 1, and dimension is that 1 2 minus 1, and the unit is that कौन आसो केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 1. सीजीएस यूनिट कौन आसो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 1. सो यही भाव में नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज रो यूनिट आउ डायमेंशन को हम एक्सप्लेन कले एवं धीरे 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 आमे किसी फिजिकल क्वांटिटी को चिन्ह नेले. ए सबुड़ा जो फिजिकल क्वांटिटी अच्छी सेमानकर प्रेजेंट ऑफ ए डायमेंशन, प्रेजेंट ऑफ ए मैग्नीट्यूड, all the physical quantities can be classified 4 categories as like dimensional physical quantities, dimensionless physical quantities, another dimensionless and dimensional. another अनुसार आमे कहि परिबा जे dimensional variable physical quantity, dimensionless variable physical quantity, dimensional constant quantity, dimensionless constant quantity. So कहर कहर देखि देबा डायमेंशन अच्छी किंतु सेमानकर न्यूमेरिकल नंबर चेंज होछि, सेमान को आमे कहबा डायमेंशनल वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटीज. एनदर क्लास रे आमे ताको डिस्कस करबा किछि फिजिकल क्वांटिटी अछि सेमानकर डायमेंशन अछि बट ताकर न्यूमेरिकल नंबरटा होछि स्थिर, सेमान को आजो डायमेंशनल कांस्टेंट क्वांटिटी. किछि क्वांटिटी अछि डायमेंशनलेस माने डायमेंशन नाही कांस्टेंट क्वांटिटी एवं तांकर फिजिकल जो अछि मैग्नीट्यूडटा मध्य स्थिर एज लाइक वैल्यू ऑफ पाई नो डायमेंशन एंड द वैल्यू इज फिक्स्ड. एवले भाव में ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी क्लासिफाइड 4 कैटेगरीज. one is dimensional variable, another one is dimensional constant quantity, another one is dimensionless variable, and another one is dimensionless constant quantity. another class रे पढ़िबा एवं से क्लास रे में पढ़िबा व्हाट इज होमोजेनिटी प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ ए डायमेंशन. आमे काहे के डायमेंशन एनालिसिस पढ़ी चंती, काहे कि एते उडी को डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटी रो जानिबा, that is the application of a dimension. another class रे में पढ़िबा classification of a physical quantity according to the dimension and numerical number and application of a dimension. Thank you, take care, goodbye.